Good evening, students. Welcome once again to our session. We are discussing about biotechnology, particularly new biotechnology, that is genetic engineering and recombinant DNA technology, as you know already. In the discussion of recombinant DNA technology, till now we have discussed so many things like different types of tools that included enzymes of different type, vectors of different type, and description about competent host. Then we started the discussion of different techniques that are involved in RDT. First of them that was discussed, techniques to introduce foreign gene or recombinant DNA into the host. Variety of techniques were discussed, right from the microinjection up to gene gun, electroporation, as well as CaCl2 or calcium chloride method. All those methods were aimed at what? Introducing the gene of interest into the host cell. Next thing we discussed as a technique was PCR, polymerase chain reaction. So what was that? It's basically a technique to amplify the desired segment of DNA, either separately or within genome, by using some basic components like a PCR machine, also called thermal cycler, primers or oligonucleotides, which are artificially and specifically synthesized according to the DNA to be amplified is needed. Then a special type of polymerase enzyme called Taq polymerase or thermostable or temperature tolerant polymerase enzyme is needed, and mostly it is obtained from those bacterial systems which grow in high temperature conditions. One of the common bacteria used is Thermus aquaticus, hence called Taq polymerase in short. And no doubt you need artificially synthesized DNTPs, that is 4 types of nitrogen bases in the form of nucleotides, correct? If you use them wisely and properly, what you get as a result at the end of PCR technique? The initial amount of DNA will be doubled at the end of each cycle. And each complete cycle has how many steps? 3 steps, repeating in the sequence of first denaturation, annealing or priming, and third renaturation, or you say polymerization. They occur at different temperatures, and hence the instrument used is called thermal cycler. That's how the things were. Applications bhi humne discuss kiye the. The common application is amplification. Apart from that, there are other applications too. Now let's move on to the another technique that is again very important as far as this chapter is concerned. The questions are asked many a times from this particular technique. The name, as you can see, is DNA fingerprinting. Do you know what is the meaning of you may or may not heard of this term, which is called dermatoglyphics. Okay, now let's just focus at this term first before we move on to DNA fingerprinting. What is dermatoglyphics? Okay, dermatoglyphics is basically study of patterns. Is it okay? Study of patterns present on fingers, palm and sole of humans.
ठीक है, इट्स एन एनालिटिकल और कंपैरेटिव स्टडी ऑफ व्हाट, पैटर्न्स दैट आर प्रेजेंट ऑन फिंगर्स, डिजिट्स बेसिकली, पाम एंड सोल, पैरों का। इसके ऊपर जो पैटर्न्स प्रेजेंट होते हैं दे आर मोस्टली यूनिक टू दैट इंडिविजुअल एंड देयरफॉर दे आर अ काइंड ऑफ identity of that individual. Even now this dermatoglyphics is used in many of our identification techniques like UIADI, Unique Identification Authority of India, आधार यूज होता है ना। आधार में क्या यूज होता है? आधार में योर रेटिना स्कैन एंड फिंगरप्रिंट यूज होता है। अटेंडेंस मशीन्स जो होती है आजकल ऑफिसेस में लगी हुई, उनमें भी क्या यूज होता है? फिंगरप्रिंट यूज होता है। तुमने बैंकों में देखा होगा आजकल ऑथराइजेशन करने के लिए साइन की जगह मैनेजर का फिंगरप्रिंट काम करता है। तुम अगर सिम कार्ड खरीदने जाओ तो वो यूएसबी के साथ एक डिवाइस लगा हुआ होता है, उस पर तुम्हारा फिंगरप्रिंट दिया जाता है या लिया जाता है, उससे तुम्हारा फिंगरप्रिंट से पूरा डेटा आ जाएगा अगर तुम्हारा आधार कार्ड बना हुआ है तो, राइट? ऐसा क्यों? बिकॉज पैटर्न्स ऑन आवर फिंगर्स, पाम एंड सोल आर काइंड ऑफ यूनिक, दे डू नॉट मैच विथ other individuals. That's why they are used as a mark of identity. But what is the problem? They can be modified by surgery or by masking. Like if someone uses hand gloves, there will be no fingerprints, है ना? अगर deliberately कोई hand gloves use करे तो fingerprint छूटने का कुछ chance होगा क्या? नहीं, because fingers and palm are masked by gloves, correct? So there is a possibility of modification or masking, okay? But if we have some kind of fingerprint or some kind of pattern in something that belongs to our body which cannot be modified or which cannot be masked, then such thing can be authentically and surely used as a mark of identity for ours. Is it okay? And such thing is present in our genome. Is it okay? Such thing is present in our genome which cannot be modified or masked. Is it okay? And that's why it is more authentic as compared to the usual classic techniques where what is studied? Patterns on fingers, palm and sole of the humans, that is dermatoglyphics. Is it okay? Now why the term fingerprinting is used here? There is no connection between a DNA or genome and a finger, and it is nothing like you isolate the DNA from finger region, therefore it is called DNA fingerprinting. It is nothing like that. It is just for the reference. Why? Because fingerprints are unique. Is it okay? But they can be modified or masked. But here the thing that is being used for identification purpose is some kind of sequence in DNA which is unique to an individual. Therefore reference wise यहाँ पे ये term ली गई है fingerprinting. As such इनका कोई भी संबंध नहीं। तो व्हाट इज DNA फिंगरप्रिंटिंग? एज फार एज डिस्क्रिप्शन दैट कैन बी गिवन, सिंपलेस्ट डिस्क्रिप्शन हम क्या दे सकते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए? यस, व्हाट कैन बी द सिंपलेस्ट डिस्क्रिप्शन दैट कैन बी गिवन फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग? इट इज अ technique. Is it okay? It is a technique which is used to identify and compare.
It is a technique that can be used or which is used to identify and compare certain sequences of DNA or say genome, okay, which are unique for an individual, okay, and cannot be masked or modified. Is it okay? Now again, this is not the definition given in some book or something like that. It's just an description that will tell you what is DNA fingerprinting in a simplest manner. Just read this once. What is given? It is a technique which is used to identify first and then compare. Simple hai na? How can you compare without identification? You can compare between anything when you know them or not. When you compare amongst the vehicle you want to buy, when you know the features of them, right? When you compare the mobiles that you want to buy, when you know the features of them, correct? So you need to first identify and then you can compare both by using DNA fingerprinting, okay. What we identify and compare, not whole genome. We don't compare whole genome. We compare certain sequences of genome, okay, which are, why we compare them? Because they are unique for an individual and cannot be masked or modified because they belong to DNA. As I was saying, the palm or sole regions can be masked or modified. DNA cannot be easily masked or modified. Therefore, comparisons made between unique sequences of DNA will be more authentic as far as identification of an individual is concerned. And therefore, DNA fingerprinting is a very important technique, and it was invented by whom? Alec Jeffries. Is it okay? Who invented the technique of DNA fingerprinting initially? Alec Jeffries is a person who is credited with the invention of, not everyone gets Nobel now. So he was not awarded with Nobel Prize, but yes, he is a person who is credited with the invention of DNA fingerprinting technique and its cheap version. Cheap version means the one which needs minimum components, okay, was invented by Dr. Lalji Singh at CCMB. There is again, like you know Niri, na? Niri Nagpur is a very famous research institute it's a central research institute in our region which works on soil and environment basically, and facts related to that. National Environmental Engineering and Research Institute, its full form. Likewise, there are different laboratories which are spread across India. They work on different things. Like if you go to NBRI, that is National Botanical Research Institute, Lucknow, the work will be on plants, है ना? वैसे ही if you go to CCMB, that is Center for Cellular and Molecular Biology, the work you will find is on cells, DNA, RNA, genomics, RDT, genetic engineering, like this. Is it okay?
So it is located in Hyderabad. As far as location is concerned, CCMB is the name of institute. Governing body is similar, CSIR, that is Council of Scientific and Industrial Research, is a apex body in India. It's just for reference. CSIR is an apex body in India that conducts research activities under the Ministry of HRD, that is you may know Human Resource Development Ministry होती है. तो HRD मिनिस्ट्री के अंडर CSIR काम करता है फॉर कंडक्टिंग वेरियस प्राइम रिसर्च एक्टिविटीज इन इंडिया थ्रू इट्स वेरियस लेबोरेटरीज दैट वेर एस्टेब्लिश्ड टाइम टू टाइम. नीरी है, it's a CSIR laboratory. This is also CSIR laboratory located in Hyderabad. Works in genomics, works in molecular biology, works in cellular biology. And one of the scientists from this particular institute, Dr. Lalji Singh, modified some basic aspects of the technique that was originally invented by Alec Jeffreys, and therefore he is known as father of Indian DNA fingerprinting. Dr. Lalji Singh. Basically, original father of DNA fingerprinting is Alec Jeffreys. Is it okay? What they did, both of them, they identified unique sequences in a genome that are present in genome of everyone, but not same, vary from individual to individual. Therefore, they are unique for an individual. Is it okay? Now we are repeatedly saying कि DNA fingerprinting में we identify some unique sequences. But what are those sequences? So see, understand this again, an important thing to understand here. We all are humans, correct? We all are humans, belong to particularly Homo sapiens sapiens. मतलब हम Homo sapiens की भी थोड़ी सी इवॉल्व्ड टाइप है, तो हम खुद को Homo sapiens sapiens कहते हैं, मॉडर्न मैन. ठीक है ना? प्रेजेंट डे ह्यूमन इज Homo sapiens sapiens. We are all humans, belong to Homo sapiens sapiens. Okay, and 99%, or you can say more than को कैसे लिखते हो? ये बड़ा है, ये छोटा है. हाँ, मतलब हमको बताना है कि 99 से भी ज्यादा, तो ये बराबर है. हाँ, इतनी मैथ्स नहीं आती मुझे. तो मोर देन 99% of our genome, that is sequences, are similar. Is it okay? And we are different from each other only because of 0.1 to 1% of DNA. Getting my point? बात समझ में आ रही है? क्योंकि हम सभी एक ही स्पीशीज का हिस्सा है, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो हम सभी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे हैं? सेम, 23 पेयर्स, 46 क्रोमोसोम्स. और अगर कंपेयर किया जाए, जो कि हमें आज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ड्राफ्ट की वजह से पता चल पाता है, हमारे जो सीक्वेंसेस है या हमारा जो जीनोम है वो सबका लगभग कैसा है? सेम. फिर भी हम वैरी क्यों करते हैं? सिर्फ इतने % डीएनए की वजह से, जिसमें करोड़ों नहीं 100 करोड़ या उससे भी ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे इतने में, है ना? और इस डीएनए में, मतलब इस पर्टिकुलर रीजन में ही हमारे क्या पाए जाते हैं? जीन्स.
पूरे जीनोम में जीन्स नहीं पाए जाते। जीनोम के सिर्फ कितने हिस्से में जीन्स पाए जाते हैं? बहुत छोटे हिस्से में। और इन्हीं जीन्स के वेरिएशन की वजह से हम एक दूसरे से कैसे हैं? फीचर्स में अलग है, बेसिक फीचर्स में अलग नहीं है। मतलब पैर सबके पास दो है ना? अब पैरों की लेंथ छोटी बड़ी वो वेरिएशन है ना? आंखें सबके पास दो है, आंखों में पिगमेंटेशन भी सबका सेम है। हाँ, किसका कलर? हाँ, तो आईबॉल का कलर मतलब किसका कलर हो चुका है, इसलिए पूछ रहा हूं। आईलिड्स का कलर क्या? काहे का कलर? आंखों का कलर मतलब काहे का कलर? बोलो ना ऐसे फिर जोर से। अच्छा, आइरिस बोल रहे हो क्या? मुझे आईलिड्स सुनाई दे रहा है। आइरिस ठीक है, आइरिस का ही कलर है ना, जिसको हम आंखों का कलर बोलते हैं। इट्स बेसिकली अ कलर ऑफ आइरिस विच होल्ड्स लेंस, है ना? तो आइरिस का कलर ब्लू होता है, ऐश्वर्या राय का है ना? बाजीगर में ऐश्वर्या राय होती तो ये नीली नीली आंखें बोलना पड़ता शाहरुख खान को, काली काली की जगह, नहीं क्या? अमीषा पटेल होती तो घारी घारी आंखें बोलना पड़ता, है ना? अच्छा हुआ काजोल थी, काली काली आंखें हो गई। जो भी जोक्स अपार्ट, बट सवाल फिर से वही बचता है कि वो जो कलर है आंखों का हमारे, वो क्यों है? जीन्स की वजह से, पर्टिकुलर अलील की वजह से, करेक्ट। लेकिन आंखें तो सबके पास दो ही है ना, बराबर? तो वही बात यहाँ पे हो रही है। अब पढ़ो इसको कि एज वी ऑल बिलोंग टू सेम स्पीशीज, our genome is maximally similar but we vary from each other only because of very small amount of our DNA. Is it okay? And there are many sequences in our genome. Just listen everything carefully. टेक्निक तो 10 मिनट का काम है, बेसिक्स नहीं समझेगा टेक्निक नहीं समझेगी। There are many sequences in our genome which are not genes. What I am saying? There are many sequences in our genome. Genome includes all chromosomes. Is it okay? There are many sequences in our genome which are not genes. Means they do not code for any mRNA or any protein. But they have their own importance. And one of such DNA is repetitive DNA. क्या बोला मैंने? फिर से एक बार रिकॉल करो। ये जो 0.121% डीएनए है जिसकी वजह से हम में वेरिएशन है, वो तो जीन्स वाला डीएनए है। ये वो पोर्शन ऑफ आवर जीनोम है जिसमें जीन्स है। वो कैसे एक्सप्रेस होते हैं, कैसे रेप्लिकेट होते हैं, ये बात हम मोलेक्युलर बेसिस में कर रहे थे। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो बचा हुआ 99% डीएनए है जिसमें जीन्स नहीं है, that region of our genome contain many sequences which are not genes but they have their own importance. One of such region is repetitive DNA sequences. Okay, when I say repetitive DNA sequences, you need to understand that these DNA sequences has nothing to do with gene. They are not representing any gene. They are not going to produce any RNA or any protein. Just understand this. Is it okay? It is a region of genome that is repetitive. Now, why it is called repetitive? It is called so because it contains, now understand properly, it contains what? Repeated sequences of nucleotides
n number of times. Okay, these sequences do not vary in sequence of nucleotides, but okay, their number varies, means number of times they are repeated varies. बहुत इंपॉर्टेंट, गहरा, अगर सोचो तो गहरा, अगर सोचो तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनो फिर पढ़ना। अगर मैं तुमको कहूं कि कैपिटल टी ये एक अलील है और स्मॉल टी दूसरा अलील है, तो ये एक ही जीन के दो अलील्स है, बराबर। फिर एक कैपिटल टी क्यों है और दूसरा स्मॉल टी क्यों है? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स में अलग है। हो सकता है किसी म्यूटेशन की वजह से हो, लेकिन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स में फर्क आने से हुआ ये कि एक डोमिनेंट बन गया और दूसरा रेसेसिव बन गया। मैंने तुमको म्यूटेशंस पढ़ाए हैं, पॉइंट म्यूटेशन, ट्रांजिशन, ट्रांसवर्शन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। वजह चाहे जो भी हो, किसी भी वजह से अगर म्यूटेशन हुआ तो ओरिजिनल जीन चेंज होगा। मतलब क्या होगा? जीन का जो भी ओरिजिनल न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा वो चेंज होगा, बराबर। इधर देखो अब, इट इज कॉल्ड सो बिकॉज इट कंटेन्स रिपीटेड सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स n number of times. n can be anything. These sequences do not vary in their sequence of nucleotides. मतलब अगर मैं कहूं कि वन रिपीट, सीक्वेंस ऑफ वन रिपीट is CAGCATG GTCGTAC, है ना? दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ वन रिपीट. इज इट ओके? So person to person, individual to individual, this sequence do not vary. Getting my point? Means मुझ में भी वही सीक्वेंस है और तुम में भी वही सीक्वेंस है. What is varying? How many times this repeat is repeating? Is it okay? How it varies? How many times this sequence is repeating? See, but their number varies, or number of times they are repeated varies, chromosome to chromosome and individual to individual. Every chromosome of our genome, we are talking about humans here, don't forget, we are not talking in general. This particular technique is applicable to humans. So human genome, in its every chromosome has a region called repetitive DNA, okay, which is present near end of the chromosome को हम क्या कहते हैं? टीलोमियर. Is it okay? Then near सेंट्रोमियर. अगर हम इंटैक्ट क्रोमोसोम की बात करें तो इस तरह का जो रिपीटेटिव डीएनए है वो हमें क्रोमोसोम्स में कहां देखने को मिलता है? टीलोमियर, मतलब एंड रीजन के पास, और सेंट्रोमियर रीजन के पास. सेंट्रोमियर तो तुम जानते हो. और क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है, बिकॉज इट इज रिपीटेड, तो जब सेंट्रीफ्यूगेशन से डीएनए, जीनोमिक डीएनए को अलग किया जाता है तो दिस पर्टिकुलर फ्रैगमेंट इज मोर डेंस, हेंस इट इज कॉल्ड सैटेलाइट डीएनए. इसीलिए इस रीजन को
जीनोम के या क्रोमोसोम के इस हिस्से को जिसमें कैसा डीएनए पाया जाता है, रिपीटेटिव डीएनए, इसे हम कभी कभी क्या कहते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स हायर डेंसिटी सैटेलाइट डीएनए या सैटेलाइट रीजन ऑफ द जीनोम भी कहते हैं। और सैटेलाइट डीएनए दो तरह का माना जाता है या दो तरह का कंसीडर किया जाता है। एक जिसे हम कहते हैं मिनी सैटेलाइट डीएनए और दूसरा जिसे हम कहते हैं माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। कॉन्सेप्ट बराबर बनाओ दिमाग में। सैटेलाइट डीएनए किसे कहा जाता है? Yes, the region of genome that contains repetitive DNA, means it is, or it must be very clear in your mind that mini satellite and micro satellite DNA is a repetitive DNA. And what do you mean by repetitive DNA? The DNA that contains similar sequences repeated n number of times, where variation is because of the number of times it is repeated, not difference in nucleotide sequence. Nucleotide sequence is same. What is different? How many times this sequence is repeated. Now, depending upon the length of each sequence, there are two types. Means अगर एक सिंगल सीक्वेंस का लेंथ जो रिपीट हुआ है उसमें से एक सिंगल रिपीट का लेंथ अगर 10 to 100 न्यूक्लियोटाइड्स का है तो ऐसे रिपीटेटिव डीएनए को हम मिनी सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। और अगर 2 to 7 बेस पेयर्स का ईच रिपीट अगर है तो ऐसे रिपीटेटिव डीएनए को हम माइक्रो सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। इज इट ओके? गेटिंग द थिंग? नाउ यहां पे इसे फिर से एक बार पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि वही बात कि ये सीक्वेंसेस इनके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में वैरी नहीं करते, ना क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम ना पर्सन टू पर्सन। ये किस में वैरी करते हैं? पर्सन टू पर्सन एंड क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम, उनके नंबर में, मतलब हाउ मेनी टाइम्स दे आर रिपीटेड। देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड VNTRs। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? VNTRs भी कहते हैं। यू कैन फाइंड VNTR आइदर ऑफ मिनी सैटेलाइट टाइप वेयर ईच टैंडम रिपीट इज ऑफ 10 to 100 nucleotide long, or you can find the VNTR as microsatellite DNA where each tandem repeat is of 2 to 7 base pairs. That's the concept. Is it okay? Now, as the number of times they are repeated varies chromosome to chromosome and person to person or individual to individual, they are like a marker or they are like a identity for that human. If we are successful in finding out the pattern of these VNTRs, we can compare these patterns and there will be a very less or almost no chance that pattern of one individual's VNTR will match with pattern of other individuals VNTR. Is it okay? And that's why they are like a fingerprint in the form of DNA. Hence the technique is called, what we basically do in DNA fingerprinting, we isolate and identify not whole genome, but we basically identify VNTR sequences belonging to each chromosome of an individual and compare them with other individuals, and it will help us to find out criminal from some criminal investigation if we find some tissue sample, or paternity testing like things where mother is saying he is your father, father is saying I am not your father, and son is saying I want to know my father. Correct?
who is my biological father? Okay, in that case, if father is denying or mother is denying over a paternity or maternity, who can prove? DNA fingerprinting can prove, क्योंकि DNA तो चेंज नहीं किया जा सकता ना, इसलिए। ठीक है, तो DNA फिंगरप्रिंटिंग इज ऑथेंटिक फॉर लाइक इतनी एक्यूरेट है कि ये कोर्ट रिजल्ट्स के लिए भी ऑथेंटिक है। उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व और स्वर्गीय मुख्यमंत्री जी को भी बेटा मानना पड़ा था इसी के आधार पर, उन्होंने मना कर दिया था, वो भूल गए थे। फिर अचानक से प्रकट हुआ उनका बेटा, तो उन्होंने जब क्लेम किया और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया, मतलब जिसको बेसिकली डीएनए टेस्ट कहा जाता है, सीआईडी में वो सोडूम के वगैरह ऐसे चिल्लर बना देता है, ऐसे मशीन में डाला, हाथ हो गया फिंगरप्रिंटिंग, ऐसा वगैरह नहीं होता बिल्कुल भी, बट यस होता है और ऑथेंटिक है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक, अब होता क्या है पैटर्निटी टेस्टिंग में कि फादर और मदर का कॉम्बिनेशन होता है जाइगोट बच्चे का, है ना। तो तुमको किन कॉम्बिनेशंस के VNTRs मिलेंगे बच्चे में अगर वो उनका बच्चा है, मदर एंड फादर दोनों के, तो वो कंपैरिजन में पता चल जाएगा। तो इधर जब कंपैरिजन करने की बात आती है तो डीएनए को हाथ में लेके तो कंपेयर करोगे नहीं, तो उधर फिर आता है काम इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेक्निक, यस, जिसको मैंने कल बोला था तुमको कि देखो पीसीआर बेस्ड एनालिसिस को आरएपीडी कहते हैं। आरएपीडी एक टर्म बोला था पीसीआर के इसमें, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेस्ड एनालिसिस आरएफएलपी से होता है, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। वी बेसिकली स्टडी द पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए by using electrophoresis technique. How we do it? That's basically DNA fingerprinting process we need to discuss. Okay. DNA fingerprinting ये एक टेक्निक जरूर है, लेकिन इसमें कई सारी चीजों का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए, उसकी टेक्निक्स, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल होता है इसमें सदर्न ब्लॉटिंग का इस्तेमाल होता है, इसमें ऑटो रेडियोग्राफी का इस्तेमाल होता है, इसमें कई सारी सब टेक्निक्स यूज होती है और कुल मिला के एक चीज बनती है जिसे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। ये बेसिक समझ में आया। तो हम जीनोम को अगर किसी पर्सन के, सपोज छोटू ने कल कुछ कांड किया और छोटू को हमको पकड़ना है, हम क्या करेंगे, छोटू का ब्लड लेंगे, ब्लड इन द सेंस सैंपल लेंगे, कोई टिश्यू सैंपल लेंगे और उसके सेल्स में से उसका डीएनए जीनोम आइसोलेट करेंगे। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, क्राइम साइट पे मिला हुआ, मतलब छोटू ने मच्छर मारा में भी और मच्छर की फैमिली ने कंप्लेंट की, ठीक है, कि ये हमारा लड़का है, ठीक है, और वो उसका नेचुरल काम करने गया था, छोटू का खून चूसने गया था, लेकिन छोटू ने उसको मार डाला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम मच्छर का सैंपल ले लेंगे, हम छोटू का सैंपल लेंगे, और गलती से छोटू का टुकड़ा रह गया था स्किन का, मच्छर को मारते मारते उसका सैंपल लेंगे। लेकिन वो टिश्यू का सैंपल जो हमको क्राइम साइट पे मिलेगा वो बहुत कम होगा। फिर इधर हम किसका यूज़ करेंगे, पीसीआर का इस्तेमाल करेंगे, बराबर। और क्या करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे सिर्फ कौन से रीजन्स को, रिपीटेटिव डीएनए वाले, VNTR वाले रीजन को एम्पलीफाई करेंगे, करेक्ट। फिर हम इस टेक्निक को शुरू करेंगे एग्जीक्यूट करना। कैसे, लेट्स सी, इज इट ओके। ट्विन के फिंगरप्रिंट्स अलग रहते हैं क्या? नहीं, ये वाले नहीं रहते, ये वाले नहीं रहते, ठीक है, ये वाले रहते हैं, क्योंकि ये पॉलीमॉर्फिज्म ड्यूरिंग ग्रोथ आता है, ठीक है, रैंडम या स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस की वजह से आता है मोस्टली, इसलिए ये चेंज होते हैं, ये वाले नहीं होते। अगर वो कौन से ट्विंस हो,
मोनोजाइगोटिक हो तो। हाँ, अगर डायजाइगोटिक होंगे तो ये वाले भी चेंज होंगे। मोनोजाइगोटिक में कुछ भी चेंज नहीं होने का चांस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन ही सेम है हर तरह से। इज इट ओके? सपोज करो कि हम तीन क्रोमोसोम की पेयर्स कंपेयर करते हैं। हर क्रोमोसोम में रिपीटेटिव डीएनए है, इसमें किसी को कोई डाउट है? When we say genome contains repetitive DNA, it means every chromosome has a repetitive DNA in it near its ends and centromere. Either it can be mini satellite type or it can be micro satellite type, depending upon how much is the length of each repeating sequence. Generally, for your knowledge I am saying it, DNA fingerprinting के लिए यूजुअली माइक्रो सैटेलाइट रीजन्स का इस्तेमाल किया जाता है। मीन्स द सीक्वेंसेस विच आर स्मॉलर इन लेंथ 2 to 7 बेस पेयर्स वाले एज कंपेयर टू मिनी सैटेलाइट। इज इट ओके? सो लेट्स से दिस इज पेयर नंबर 1। अब 23 पोजिशंस तो निकालने से रहे हम। ओके, इट इज से क्रोमोसोम नंबर 2 एंड इट इज से क्रोमोसोम नंबर 3। ठीक, ये किसका है? सस्पेक्ट का। ठीक, और ये जो बैंड्स मैं इस पे निकाल रहा हूं ये ईच सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब तुम बोलोगे सर होमोलॉगस पेयर है तो फिर एक पे 1 2 3 4 5 6 क्यों और दूसरे पे 3 क्यों? अरे होमोलॉगस है ना, सिमिलर होती है, सेम कहाँ होती है? एक पैटर्नल है और दूसरी मैटर्नल है तो सेम क्यों होंगे? जो भी पैटर्न है वो उसका पैटर्न है, इस इंडिविजुअल का पैटर्न है, बराबर। ईच रेड लाइन रिप्रेजेंट्स व्हाट? ईच रिपीट means how many times here repeats are there? Each repeat, each line is red, that represents sequence is same. Only difference is how many times it is repeating in chromosome number 1 6 times and 3 times, in chromosome number 2 5 times and 6 times, in chromosome number 3 5 times and 2 times. Correct? For some other individual there will be repeats on chromosome number 3 but it will not be 5 and 3, 5 and 2, it will be something else. There will be repeats for other individual on chromosome number 2 but it will not be 5 and 6, it will be something else. So ये variation आता है individual to individual. Is it okay? अब जब हम इस जीनोम को आइसोलेट करेंगे और सिर्फ कौन से हिस्से को कट करेंगे? रिपीटेटिव डीएनए वाले, तो इसका फ्रैगमेंट बड़ा आएगा, इसका छोटा आएगा, है ना? क्योंकि नंबर ऑफ रिपीट्स इसमें ज्यादा है, इसमें कम। इसका इससे थोड़ा छोटा आएगा, ये और ये सेम आएगा 6 वाला, ये और ये सेम आएगा, ये और छोटा आएगा, बराबर ना? ऐसे तुमको क्या मिलेगा? वेरिएशन इन लेंथ ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट कंटेनिंग
VNTR. Why you will get the differently length DNA fragments containing VNTR? Because they vary in number of repeats they contain, and we are using restriction endonucleases which are VNTR specific. So they will produce cuts and produce fragments containing repeats. So इधर repeat containing fragment बड़ा क्यों होगा? 6 repeats है. इधर छोटा क्यों होगा? 3 ही repeat है. तो ये जो वेरिएशन है ये किस में है? लेंथ ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट. लेकिन इस वेरिएशन को तुम एक्चुअल में कब देख पाओगे? जब तुम इन फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करोगे. एंड फॉर दैट यू नो द फैक्ट कि डीएनए इज अ चार्ज्ड मोलेक्यूल, हैज नेगेटिव चार्ज ओवरऑल, एंड इफ यू यूज द करंट or electric field, it will definitely move towards anode, positively charged electrode, correct? In a buffered solution, if you keep it and provide proper conditions to move in an electric field, it is going to move towards positively charged electrode. But whose movement through the medium will be faster? The one which is smaller. And whose movement will be comparatively slower? The one which is comparatively larger. So this makes it possible to separate them according to length, and this fragmentation is done with the help of restriction endonuclease. Hence, when you apply the technique of electrophoresis, which I will tell you in detail tomorrow because it's not possible to consider it today. When you separate the DNA fragments on the basis of their length in an electric field having two ends, negative and positive, you will see the separated fragments and they are separated on the basis of their length. सबसे ज़्यादा लेंथ वाला सबसे पीछे होगा, सबसे कम लेंथ वाला सबसे आगे जाएगा. इज इट ओके? ठीक है, क्योंकि चार्ज सभी पे सेम है तो सभी पॉजिटिव की तरफ ही भागेंगे. लेकिन कौन जल्दी भागेगा? जो छोटा है. और कौन देर से भागेगा या पीछे रह जाएगा? जो लेंथ में कंपैरेटिवली बड़ा है. तो अगर तुम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद करोगे तो तुमको एक पैटर्न दिखेगा. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक सबसे आगे होगा, कुछ बीच में होंगे, एक सबसे पीछे होगा. ये सब किस बेसिस पे होगा? ओनली प्योरली लेंथ के बेसिस पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सबके लिए कॉमन है, चार्ज सबका सेम है. तो वैरी क्या करता है? लेंथ. तो इसी पैटर्न ऑब्टेन करने को हम कहते हैं RFLP, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म. और इसी पे बेस्ड है ये टेक्निक जिसे हम कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. अब इसको पूरा एग्जीक्यूट कैसे? अच्छा, ये लिखा ही है तो सुन लो. अब यहां पे देखो, ये मे बी होगा 2 वाला, ये 3 वाला, ये 5 वाला, ये और कोई है क्या बीच में? ये 6 वाला, बराबर. अब तुमको क्राइम साइट पे जो टिश्यू सैंपल मिला उसका भी अगर पैटर्न ऐसा ही आया, 2 सस्पेक्ट्स हैं, दिस इज सस्पेक्ट 1, दिस इज सस्पेक्ट 2 एंड दिस इज क्राइम साइट सैंपल. तो कंपैरिजन से क्या पता चलता है? आइडेंटिफाई करेंगे ना हम इसको. पहले आइडेंटिफाई कैसे करते हैं इसके लिए हमको प्रोसेस पढ़ना पड़ेगा. आइडेंटिफाई करने के बाद कंपैरिजन में हमको क्या पता चलता है कि 2 का कोई संबंध नहीं है क्राइम साइट वाले सैंपल से, 1 का है. इज इट ओके? क्योंकि इसका डीएनए का VNTR का पैटर्न इस टिश्यू सैंपल से मैच करता है. दैट्स हाउ वी कैन execute the technique for identifying criminals. Similar thing can be done for paternity testing. So these two are the most important applications as far as DNA fingerprinting is concerned. Paternity testing and crime investigations. Is it okay? Now how it is exactly carried out, we will deal with it tomorrow, but it will not take a complete class. So we will deal with something else also. Okay, like
लाइब्रेरीज, DNA लाइब्रेरीज। ओके, ठीक है।